टेस्टी बिरयानी। अरे बिरयानी खा ली क्या? बार बार नीचे कर देता हूँ यार मैं। ये है पहला पीस, 55.5 का कटेगा पहला पीस, ठीक है काटो। Didn't even get to cross. तो भाई अपन लोग आ गए हैं दुश्मनों से लोहा लेने। हमारे साथ है हमारे प्रिय हेलो भाई। तो अभी रिसेंटली वी हैव बॉट 3 just for the jig. Let's see what happens. We are at the most expensive place of Bhopal and it's not E7, it's वो कबाड़ खाना। और हम यहाँ पे आ गए हैं बाबर भाई की शॉप पे टेस्टी बिरयानी। अरे बिरयानी खा ली क्या? तो ये है हमारे बाबर भाई एंड ये है इनकी शॉप विच इज, बार बार नीचे कर देता हूँ यार मैं। बाबर भाई आज करें बिस्मिल्लाह। हम लोग आ गए हैं बाबर भाई के इरशाद भाई के पास। नहीं बोला किशन नहीं बोला हमारा जो प्रोजेक्ट है मोस्टली यहीं पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो अपने आपको मिलवाता हूँ इरशाद भाई से। इरशाद भाई बताएं। ये हमारे शाहरुख भाई ये कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया यूनिक। उसका जिग का हो या इसे फरमा का हो, तो हम उसका फरमा बनाएंगे। तो भाई ये अपने जिग का पूरा साइज और इरशाद भाई इसके अकॉर्डिंगली पूरे जितने भी अपने 60 फीट का अप्रोक्सीमेटली पाइप है पूरा मार्किंग और लेवलिंग के साथ कटेगा। एंड ये हमारा अशोक चक्र, इससे आज हम पूरा पाइप काटेंगे जो भी हमारे पास स्क्वायर ट्यूबिंग है। एंड उसको काटने के बाद वी विल स्टार्ट वेल्डिंग इट फॉर द जिग एंड जिग फॉर व्हाट, प्लीज स्टे ट्यून्ड टू सी ऑल द एक्शन। पहले सेक्शन में हमने ये जितना भी पाइप खरीदा था उसको हमने काट के लेवल करके सो दैट कि हमें पता हो कि जिग का कौन सा पार्ट कहाँ पे वेल्ड होना है। जब आप कटिंग करते हो मेटल की तो उसमें थोड़े से ऐसे बर्स आ जाता है, तो हम उसको फिनिश कर रहे हैं। इसकी जो ये चीज़ है इसको शैम्फर कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू सी हियर, मैं अपना हाथ आराम से यहाँ पे फेर सकता हूँ। सी दिस इज हाउ वी वांट द मेटल टू बी। फाइनली द टाइम हैज कम। अपने पूरे प्रोजेक्ट की पहली नॉचिंग करने वाले हैं। किसी भी स्क्वायर ट्यूब के अंदर हमें इस तरह का आर्च चाहिए, सर्कुलर आर्च, सो दैट हमारी चैसी इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठे, फ्लश बैठे। तो अब हम उसके लिए मार्किंग करने वाले। दीज आर द टेम्पलेट्स को हम काट के इस पे लगाएंगे और उसके बाद मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी सी साफ सफाई कर लेता हूँ।
these are the few products that we're using. Some magnetic right angles, some quick release clamps from this brand called Engico. However, we are not at all sponsored from anyone as of now, but still the products that we are using from Engico are amazing. So guys, I completely forgot to shoot the outro video, but here it is, the video for the jig. And in the next part, we'll be moving over to the chassis. So signing off, tata, bye-bye, take care. Please don't forget to like, subscribe and share the video if you like what I do and if you want to see what I am doing. So thank you.